हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल रेमेडी मैथ्स कोचिंग। मैं पढ़ाता हूं एकेडमिक 9 to 12। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th और हमारा टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 का ये पहला टॉपिक है और सेट थ्योरी सेट के जितने भी थे पहले चैप्टर के हमने कवर कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसको भी कर लेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आइए जानते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम फ्रांस, रेनी डिकार्टे। He was a mathematician in France in 17th century, and he has developed Cartesian product, Cartesian plane. That's why in respect his name we call Cartesian product. In this topic you will learn product of two sets. Chapter 1 was about union, intersections and so on. And in this topic particularly you will study the product of means if we have a set A and we have a set B, what will be their product? Means set A and set B. Now in new version of NCERT books, NCERT has accepted A dot B, not A cross B, because A cross B in vector algebra this gives minus B cross A cross B cross A. Vector algebra due to vector algebra this gives minus B of, that's why NCERT has accepted A dot B. But in old books we are given A cross B and we read this as A cross B. So continue A cross B, does not matter. Okay, suppose we have two sets A let's define first A cross B. To define A cross B, first you must know about the ordered pair of, as you seen, suppose X is any set having element 2, 3, okay, 2, 3, and you have another X set Y 3, 2. Here in set X you have 2, 3 and set Y elements having two elements 3, Y. They are both are same. We can write this X barabar Y. Okay, means it does not matter in sets which element is first and which element is at second place. If the elements are same, then the sets are equal. But in ordered pair, suppose we have A cross B in parenthesis small bracket, then this is A comma B. Is this true? No, of course. You know that ordered pair represent a point in xy plane. Ordered pair, suppose in place of A and B we have 3, 5 and this is 5, 3. Is this equal? No. Represent this 3, 5. This will be 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Here 3, 5 will be in first quadrant here, and also represent 5, 3
move from 0 right hand side 1 2 3 4 5 and 3 upward 1 2 3. Here will be 3 comma 5. As you can see that they are at different places, so we can conclude that 3 comma 5 is not equals to 5 comma 3. Okay, in general a comma b is not equals to b comma a in ordered pair, but in sets 2 comma 3 equal to 3 comma 2. सेट्स में इक्वल है लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में इक्वल नहीं है. ओके, ये कब इक्वल होगा? सपोज कर लीजिए वी हैव ए कामा बी इक्वल्स टू सी कामा डी. दे विल बी इक्वल सेम. दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू सी एंड बी इक्वल्स टू डी. ओके, अगर दो ऑर्डर पेयर बराबर है तो इनके फर्स्ट एलिमेंट बराबर होंगे और सेकेंड एलिमेंट बराबर होंगे. ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन है ए प्लस बी कामा 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 4 कामा माइनस 5. क्वेश्चन है, ऑर्डर पेयर का क्वेश्चन है. a प्लस बी कामा 2b माइनस 3 इज इक्वल. Observe here that sign symbol of equality 4 comma minus 3. From here two ordered pair will be equal if first element of first ordered pair is equal to first element of ordered pair second ordered pair. A plus b will be equal to 4 and 2b minus 3 will be minus 5. From there a is equal to c and b is equal to d. Here a is equal to minus मतलब a plus b is equal to 4 and this 2b minus 3 equal to be minus 5. Here 2b means minus 2, transforming minus 3 from left hand side to right hand side. b is equal to minus 1. Putting the value of b in this a plus b equals to 4 and we find out b is minus 1. This implies that a is equals to 5. So this is our answer. So I hope that you understood ordered pair concept. Now come to the a cross b, means Cartesian product of two sets. Cartesian ordered element of a cross b will be types of ordered pair. Means इसके जो एलिमेंट होंगे a क्रॉस b के वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे. ठीक है, सच दैट a belongs to set A and b belongs to set B. ये होगा. ठीक है, a क्रॉस b का क्या होगा? उसके एलिमेंट जो होंगे a कामा b टाइप के होंगे, जिसमें पहला एलिमेंट सेट A से होगा और दूसरा एलिमेंट सेट B से होगा. नाउ सपोज वी हैव, क्वेश्चन देखिए, वी हैव 2 4 6 एंड सेट B हैज 3 5. Find A cross B. A cross B. A cross B कैसा होता है? So how to find out A cross B? Look at here. Concentrate. We write 2 and now second element from B. This is our first element. Again 2 comma second element from 5. Each element from A combined with
elements of B. Now taking 4, this will 4 from first set and 4 comma 3. As you write 2 comma 3, 2 comma 5, again we are taking 4, 4 comma 3, 4 comma 5, okay, and now 6, taking 6, 6 comma 3 and 6 comma 5. If I say to you, find out B cross A, what will be B cross A? B cross A means, to find B cross A, we start from B, 3 comma 2, 3 comma 4, 3 comma 6. Okay? First we write element from B and taking 2, 4 and 6 one by one. Again we taking second element from B and taking similar way 2 comma 5 comma 2, 5 comma 4, 5 comma 6. Is this A cross B equals to B cross A? क्या दोनों सेम है? नो. A क्रॉस B is not equal to B cross A in general. Okay? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Number of elements in A cross B. Here number of elements in A, if the number of elements in A is P and in number of elements in set B is Q, then number of elements A cross B will be equals to P into Q. As you seen in previous example, there were 6 elements, 2 comma 3, 2 comma 5, 3, 4 comma 3, 4 comma 5, 6 comma 3, 6 comma 5. There were total 6 elements, means here was 3 elements in set A and 2 elements in set B. 3 into 2 equals to 6. Okay? This is your example. Take an example. We are given a condition A cross B, element of A cross B is type of A comma B, and condition is B equals to 3A minus 2. We are given these conditions, and if again question है ये, again if x comma minus 5 and 2 comma y is elements of A cross B, then find x and y. x और y की वैल्यू निकालना है. हमें A क्रॉस B दिया गया है. A क्रॉस B के लिए एक कंडीशन दी गई है, B इज इक्वल्स टू 3A माइनस 2, और हमें दिया गया है x कामा माइनस 5y एंड 2 कामा y इज एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B. तो इसको सॉल्व कीजिए. x कामा माइनस 5 is element of set A cross B, then this must satisfy this equation. Okay, so
at the place of A we place x, and at the place of B we replace minus 5. Minus 5 equals to 3 into 3x minus 2, as x comma minus 5 belongs to A cross B. Again 2 comma y means A comma B. In place of A we put 2, and in place of B we put y. Y equals to 3 into 2 means 6. 6 minus 2, as 2 comma y belongs to A cross B. Here from second we get y equals to 4, and from here 3x equals to minus 5 plus 2. 3x equals to minus 3. This implies that x बराबर minus 1. x बराबर 1 and y equals to 4. This is your answer, and I hope कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा. Now suppose we are taking again 2 comma 5, 2 elements, and in set B elements are 2 comma 7. In set A and B, one element is common. One element is common, which is 2. दोनों सेट में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 2 कॉमन है. माई क्वेश्चन इज हाउ मेनी एलिमेंट विल बी कॉमन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A. A क्रॉस B और B क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे, जनरल में फॉर्मूला बताना है. ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट्स हो, यहाँ पर हमने 2 लिए हैं. हो सकता है कि 3 एलिमेंट हो, 5 हो, 100 हो, तो जनरलाइज करके एक फार्मूला डेवलप करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले A क्रॉस B को हम फाइंड आउट कर लें. 2 2 2 7, 2 2 2 7. दूसरा क्या होगा? 5 2 5 7. क्लोज द ब्रैकेट. एंड B क्रॉस A. अब इधर से चलेंगे. 2 2 2 5 7 2 7 5. My question is, how many elements are common in A cross B and B cross A? Common elements. Here we find out A cross B and B cross A. Observe how many elements are common. They have 4 elements because here 2 elements and here 2 elements, P and Q, P and into Q, 4 elements in A cross B and 4 elements in B cross A. You can observe that here only one element is common, 2 comma 2. When one element is common here, then element common is A cross B and B cross is 1. In general, now take two 5 7 and 2 7 11. You can observe that 2 elements are common, 2 7 2 11. Sorry, 2 7 and 2 7 in both sets are common. We are find out
how many elements will be common in A cross B and B cross A? First find out A cross B. A cross B, 2, 2, 2, 7, 2, 11, again 5, start from 5, 5, 2, 5, 7, 5, 11, now 7, 7, 2, 7, 7, 7, 11, 7, 2, 7, 7 and 7, 11. There are 9 elements in A cross B. Similar way, B cross A. From here start 2, 2, 2, 5, 2, 7. 2, 2, 2, 5, 2, 7. 7, 2, 7, 5, 7, 7. Again 11. 11, 2, 11, 5, 11, 7. In B cross A, we have also 9 elements. Now, how many elements are common A cross B and B cross A? Look at this. 1, 2, 2 common, 2, 7 common, 2, 7 common, 7, 2 common, 7, 2 common, यहाँ 5 होगा, 7, 2 common, 7, 2 common and 7, 7 common, 7, 7 common. There are 4 elements common. Common element 4. Okay. When one element was common, then in A cross B and B cross B there was also one element common. When two element is common, A and B between, then common elements are 4. How can you generalize this? When one element was common in A and B, then in A cross B and B cross A कॉमन एलिमेंट्स कितने थे? 1 थे. When two elements are common in A cross B and B cross A, common elements कितने? 4. This can be written is 2 की पावर 4. जब एक एलिमेंट कॉमन था तो A क्रॉस B और B क्रॉस 1 में भी एक एलिमेंट कॉमन आया, हम इसे 1 की पावर 1 लिख दिया. ठीक है ना. जब 2 एलिमेंट्स दोनों में कॉमन थे तो A क्रॉस B और B क्रॉस B में 4 एलिमेंट्स कॉमन आए, हमने इसे लिख दिया B 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2. जब n एलिमेंट्स कॉमन होंगे, व्हेन this can be written a square too. Okay, when n elements are common, this means common elements in A cross B and B cross A, n to the power
2. Clearly look at the pattern, 1 square, 2 square, n square. जब 1 एलिमेंट कॉमन था 1 आया दोनों में, जब दोनों में 2 एलिमेंट्स कॉमन था तो 4 आया, 4 को हमने 2 की पावर 2 लिख दिया। तो जब दोनों में n एलिमेंट कॉमन होंगे तो यहाँ पर कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, n स्क्वायर। मीन्स अगर दोनों में 3 एलिमेंट कॉमन हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मीन्स 9 एलिमेंट कॉमन आएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप एक्सरसाइज 2A करने की कोशिश कीजिए। आप यू विल बी एबल फॉर टू सॉल्व दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।